So welcome back, students. This is lecture 10 of decision making tools, additional problems, lecture 3. Okay, overall it is lecture 10 and additional problems which we are doing at the end of the study material. Okay, that is lecture 3 of them. Okay, this is lecture 3 of that part. And we are doing CMA intermediate June 2023 attempt. The exams are expected to start from 15th of July. Okay, so I'll take you to the study material now. We had finished till lecture problem 18 last time. Okay, this is the problem we did last time, the last lecture. So we're going to start with problem 19. So let's read this problem. Dynamic company has 3 divisions, each of which makes a different product. Budgeted data for the coming year diya hai. Okay, so these are division A, B and C. So we've got sales value for all 3. Then we have वेरिएबल एलिमेंट मटेरियल लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये है वेरिएबल कॉस्ट. ओके, तो टोटल होगा आपका वेरिएबल कॉस्ट. देन यू बीन गिवन फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, चलो ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बन जाएगा हमारा सीधा सीधा. ठीक है, तीनों डिवीजन पे विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. नाउ मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू क्लोज डाउन डिवीजन सी. ओके, द थिंग हियर इज management is considering closing down of division C. Okay, no possibility of reducing fixed cost. Okay, that means total fixed cost here will remain the same for both alternatives. Fine. Advise whether C should be closed down or not. ठीक है, इसको हम उतना डिटेल में नहीं करेंगे, जैसे कैलकुलेशंस जो है, क्योंकि यहाँ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लेट्स जस्ट प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट before and after. ठीक है, so this is before closing down division C. Okay, इसमें क्या होगा, sales just put the values as it is. ठीक है, nothing is to be done here. Put the sales value, just create a total column. Okay, and then for variable cost they have already given us 3 things, correct? Just put all 3. Okay, total of this will be your total variable cost. ठीक है, then sales minus total variable cost gives you contribution. Fine. और यहाँ पे आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, यू कैन जस्ट टोटल इट. 70,000 इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, इफ यू सी दिस द प्रॉब्लम, यहाँ पे see just add these 3. Okay, this 70,000, this is your total fixed cost. Okay, total fixed cost we will put here. ठीक है, so we get your profit figure 63,000. Okay, now division C will be closed down. ठीक है, so in the same statement what we have to do is just remove division C. Okay, just remove division C and see the impact. Okay, C का पूरा पार्ट हटा देना है बस. Okay, see here contribution for A is 78,400, B is 35,000. ठीक है, here also it is 78,400, B is 35,000. So nothing has changed here in the second one. Just ये जो C है, we have removed it altogether. That's all. ठीक है, now if you see the impact. Okay, अब इसका impact देखेंगे. So fixed cost will remain at 70,000. Okay, so profit आता है अभी 43,400. In the earlier option, how much was the profit? 63,000. Okay, it was more, right? Why it was more is because C was giving you a contribution. ठीक है, C जो है, it was giving you a contribution of 19,300. Okay, so by closing it down, you have stopped this contribution. Okay, so it was contributing 19,600 towards the fixed cost. Now the whole fixed cost has to be borne by A and B.
So that's why the difference is 19,600 in both the options. ठीक है? So ये है. So it should not be closed down. That will be your answer. ठीक है? और क्या बोलना है? As long as there is a contribution of ₹1, even ₹1 from division C, it should not be closed down. Okay? Because it will reduce the total fixed cost to that extent. Okay? चलिए. Okay? Wherever there is a need for calculations, ठीक है, हम लोग will go to the notes and to the calculations. ठीक है? Whatever is straightforward, we'll just do it orally and proceed. ठीक है? It will save time. Next problem is problem 20. Mr. Young has 1,50,000 investment in a business. Okay. So 1,50,000 is not sales or anything. It is his investment capital. Okay. So he wants how much profit? 15% profit on this money. ठीक है. 15% of 1,50,000 आप करोगे तो कितना आएगा? 15 into 1,500. Okay. 22,500. So this will be 22,500 is the profit that is desired. Okay. 22,500 is the desired profit. ये दोनों चीज जो दिया है आपको, इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बेसिकली 15% प्रॉफिट ऑन his money, that is return on investment. Okay, these two are just giving you the profit figure. Okay, desired profit. Fine. So then इसके बाद अच्छा, अब नेक्स्ट ये है, his variable cost is 60% of sales. ठीक है. So this is variable cost ratio. So क्या बोला जाता है? Variable cost ratio. The variable cost ratio and contribution ratio are complements of each other. That means if you do 100 minus this 60, 40 will be your PV ratio. Okay. Your PV ratio is 40 here. Okay. Fixed costs are 75,000 per year. Okay. Fixed cost is 75,000. So show supporting computations for each answer. Okay. They asked us some sub questions. Okay. What sales value must be obtained to break even? Okay. So break even point is क्या formula है break even point का? Fixed cost F upon PV ratio. ठीक है. Break even point is what? F upon PV ratio. Fixed cost upon PV ratio. What is PV ratio? Just now हमने देखा था. ठीक है. यहाँ पे आपको 60% of sales is your variable cost ratio. Okay. Variable cost ratio is 60% of sales. So PV ratio is 40%. So F upon 40% आप करोगे तो break even point you will get. Okay. चलिए. Then next question is what sales value must be obtained for his 15% return on investment. So 15% we had just calculated. 15% of 1,50,000 was 22,500, right? ठीक है. So they're just asking you sales at desired profit. ठीक है. So इसमें what we'll do, just go through your marginal cost statement, you will get the answer. Profit is 22,500. Okay, and you have got fixed cost plus profit will give you contribution. Okay, once you have contribution, you have PV ratio. Sales into PV ratio is equals to contribution. Okay, so sales will be contribution upon PV ratio. Okay, so we will see. मैं आपको just बता रहा हूँ what will be our approach. Okay, चलिए. So A and B will do, then we'll go to C. ठीक है, इतना हम कर लेते हैं first. Break even sales. This is a small problem actually. ठीक है. So first year PV ratio you will calculate. ठीक है. PV ratio हमारा will be 40%. ठीक है. Variable cost ratio का complement होता है हमेशा. ठीक है. If it is given in percentage, normally variable cost ratio will be given in percentage only. Just do 100 minus variable cost ratio, you will get PV ratio. So this is 40%, PV ratio is 40%. So fixed first thing which they have asked is break even sales.
F upon PV ratio. You will get it. ठीक है. Then sales for desired profit, that is the second point. ठीक है. Our desired profit कितना था? 22,500. ओके. ठीक है. तो इसका क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. ओके. और आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं. दिस इज नथिंग बट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट इज योर desired contribution. What contribution you want? That is 75,000 minus plus 22,500. ठीक है. And then just use the formula sales into PV ratio is equals to contribution. ठीक है. So sales is equals to contribution upon PV ratio. ठीक है. So ये है, this is nothing but a contribution, desired contribution. Okay. This upon PV ratio आपको ये मिल जाए. ठीक है. We have already discussed this formula earlier on. इसके हमने problems भी किए हैं, इसीलिए I am just not spending too much time on what you already know. ठीक है. चलिए. Then shutdown sales का मैंने आपको लास्ट वाला जो मैंने छोड़ा था ऊपर. ठीक है. Let me show you that. So now what they are asking us is, Mr. Young estimates that even if he closed the doors of his business, okay, even if he closed the doors of his business, he would incur 25,000 expenses per year. Okay. So ये जो चीज है, this is given for calculating shutdown sales. ठीक है. यानी when you want to shut down your business, ठीक है, you have to calculate break even point. हम निकालते हैं break even sales. तो break even sales on shutdown is called as shutdown sales. तो उसमें बस इतना ही करना है आपको. What is normal break even sales formula is F upon PV ratio. ठीक है. Here also you have to do same. But ये जो expense दिया रहेगा ना, which you will continue to incur anyways. ठीक है. So this you are going to incur. इसलिए इसको you will not consider it as part of your F. ठीक है. आप business operations भी बंद कर दिए. Okay. This you will continue to incur. Okay. इसका kind of business से there is no direct relation. So which is why for calculating shutdown sales, ये जो पार्ट है ना, ये शटडाउन एक्सपेंसेस जो है, दिस इज रिमूव्ड फ्रॉम एफ. बस फिर आपको न्यू एफ मिल जाता है. एफ अपॉन पीवी रेशियो कर देंगे, यू विल गेट ब्रेक इवन सेल्स. ठीक है. दैट्स ऑल. उतना ही है. सो आई हैव डिस्कस्ड द कांसेप्ट ऑफ शटडाउन सेल्स आपके पहले लेक्चर्स में, राइट. तो बस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट, ये आपको यू विल गेट शटडाउन सेल्स. ठीक है. इट इज ब्रेक इवन सेल्स ओनली. ठीक है. एट द पॉइंट ऑफ शटडाउन. फिक्स्ड कॉस्ट में से जस्ट रिमूव शटडाउन कॉस्ट. ओके. और ये इज इक्वल्स टू नहीं, ये एक्चुअली अपॉन पीवी रेशियो. ठीक है. ये फिक्स्ड कॉस्ट नाउ बिकम्स फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट. ठीक है. डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. ये फॉर्मूला है इसका. दैट्स ऑल. ओके. शटडाउन एक्सपेंसेस इज गिवन एज 25,000. ठीक है. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट शटडाउन कॉस्ट. ठीक है. आई विल शो यू इन योर नोट्स आल्सो वेयर आई हैव पुट योर shutdown. Here is your shutdown sales. ठीक है. shutdown sales क्या है? F minus shutdown cost upon PV ratio. ठीक है. just remember it. okay. logically अगर आप भूल भी जाते हो तो मैं बताता हूँ. shutdown sales, first thing is shutdown sales is nothing but break even sales. वो याद रख लें. ठीक है. so it will be break even sales formula. that is क्या है? F upon PV ratio. F upon PV ratio is your break even sales formula. ठीक है. ये ऐसे ही रहेगा बस. ओनली इन शटडाउन सेल्स व्हाट वी आर सेइंग इज देयर इज सम कॉस्ट व्हिच वी आर गोइंग टू इनकर बिकॉज़ दीस आर ऑल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स. ठीक है. यू शटडाउन बिजनेस, सम अदर कॉस्ट कुछ आपको वैसे भी इनकर होगा, अदरवाइज आल्सो इट इज यू आर गोइंग टू इनकर दैट. ठीक है. सो दैट यू विल नॉट, यू डोंट वांट टू सी इट एज अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस. इस बिजनेस का जो फिक्स्ड कॉस्ट है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हम मान रहे हैं. The shutdown costs. ठीक है. as it is for other reasons we have to pay those costs. इसीलिए F में से वो निकाल दिया जाता है. okay. just remove shutdown cost from F. बस हो गया आपका न्यू फिक्स्ड कॉस्ट बन जाता है. that upon PV ratio is your shutdown sales.
तो ऐसा याद रखना, शट डाउन सेल्स इज सेम एज योर ब्रेक इवन सेल्स। तो आपको ऑलरेडी ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला यू नो, ठीक है, इट विल वेरी इजी फॉर यू टू कंप्यूट। बस एफ से, from F you have to take out some expenses which are called as shutdown expenses, बस उतना ही है, ठीक है, there is nothing more than that in it, okay। चलो ये हो गया। then problem 21, ठीक है, तो ये है इंफॉर्मेशन सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, S minus V, okay, 60% of sales is your variable cost। then okay, so here itself we know that PV ratio is 40%, ठीक है, this is nothing but variable cost ratio, ठीक है। चलो fixed cost is 80,000, profit before tax, okay। So normally in marginal cost problems we don't talk about income tax वगैरह, ठीक है। तो इसमें बस कुछ नहीं है, बस इनकम टैक्स है, उसका कोई यूज भी नहीं है हमको, ओके, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ओके। यहाँ पे बस इतना ही देख लेना है आपको, सी नेट प्रॉफिट इज 32,000, ओके, कितना हो गया, 80,000 माइनस 32,000 इज हाउ मच, 48,000, ठीक है। So 48,000 is your income tax. So just get the income tax percentage using this, ठीक है। 48,000 upon 80,000 देखेंगे तो विल गेट इनकम टैक्स परसेंटेज, ओके। तो देख लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू 48,000 अपॉन 80,000, ठीक है, 0.6, ओके। ये है हमारा इनकम टैक्स परसेंटेज, ओके। चलिए, ओके, सो लेट्स नाउ गो अहेड। अच्छा, इससे वी कैन फॉर्म द बेसिक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, राइट। चलिए फिर क्या है, कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग द प्लांट, ओके। अच्छा, इन इफ इट एक्सपैंड्स द प्लांट देयर इज एन इंक्रीज्ड फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 40,000, ठीक है। करंट फिक्स्ड कॉस्ट इज 80,000, अपार्ट फ्रॉम दिस 40,000 विल बी न्यू फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, राइट। मैक्सिमम प्रोडक्शन in the new plant will be 2,40,000, ओके। तो अच्छा ये देखिए, यहाँ पे ये प्रोडक्शन नहीं दिया है आपको, ओके, यू हैव टू रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। मैक्सिमम प्रोडक्शन इन द न्यू प्लांट विल बी वर्थ 2,40,000, ओके, विल बी वर्थ 2,40,000 मीन्स दिस इज सेल्स वैल्यू। when you increase capacity by 40%, for that capacity whatever you are able to manufacture for that new capacity, okay, for that you will be able to get a sales of 2,40,000, okay। बस इस प्रॉब्लम में इसी एक सेंटेंस का खेल था, ओके। दिस सेंटेंस जो है मार्क्ड इन वायलेट हियर, वायलेट कलर से जो मार्क किया है, ओके। सो द थिंग इज दिस 2,40,000 इज एडिशनल सेल्स है फॉर दैट 40,000, ठीक है। चलिए, then company wants to earn additional income 3,200 on investment, ठीक है। so because it is investing 40,000 इसमें, so it wants to earn an additional investment of 3,200 on investment, यानी आपको you don't have to calculate anything, they have directly given you need 3,200 at least, वो मतलब है इसका, ठीक है। तो गिव योर ओपिनियन ऑन प्लांट एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, फर्स्ट थिंग इज फॉर्मुलेट योर बेसिक मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, दिस इज योर बिफोर एक्सपेंशन वन जिसका वी हैव गॉट डेटा, ओके। so sales is 40,000, ये वेरिएबल कॉस्ट 60%, दिस इज कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन एज 80,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 80,000, 1,60,000 माइनस 80,000 इज 80,000, ठीक है। और टैक्स रेट हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाले थे रेट 60%, ओके।
तो 60% विल बी टैक्स रेट, ठीक है। तो जो टैक्स माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा बचा हुआ, दैट विल बी 40%, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे डायरेक्टली इंटू 40 कर दिया, 40% वी हैव डन, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो इसमें, ठीक है, इफ आप चाहते हो तो आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स पुट इनकम टैक्स, इट विल बी 0.6 रहेगा, ठीक है। 80 के नीचे विल बी 48,000, 80,000 माइनस 48,000 यू विल गेट 32,000, इट विल बी द सेम थिंग, ओके। तो फर्स्ट थिंग ये हमने कर ली, ठीक है, ये तो दिया हुआ था, हमने कुछ किए नहीं, राइट। So you have just arranged this as it is. Now, main thing in this problem is your expansion value. ठीक है, ये है main इस problem में। 2,40,000 is the value of sales. ठीक है, so contribution we know is 40% from here. ठीक है, 2,40,000 into 40% कीजिए, you will get 96,000. Okay, because this relation will not change. Variable cost PV ratio will not change. Okay, so this you got as 90%, and then 40,000 is the fixed cost, correct? क्योंकि हमने एक्सपेंशन किए हैं ऑफ 40,000, ओके। 40,000 इज फिक्स्ड कॉस्ट, 96,000 माइनस 40,000, ओके, इट गिव्स अस व्हाट, 56,000, ओके। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड 2 into 40% आपको ये मिल जाएगा सीधा, ठीक है, ओके। आपको अगर डायरेक्ट ऐसा नहीं करना, यू वांट टू शो टैक्स रेट, नो प्रॉब्लम, आफ्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जस्ट पुट 60% टैक्स, ठीक है। एंड दिस 56,000 ये जो है, this minus tax you do, you will get this 22,400 only, ठीक है, in any case. So now आपका profit is 22,400. So by expansion we are getting a profit of 22,400, or they wanted how much? They wanted only 3,200, so it is much more than that, ठीक है। इसलिए आपको कुछ करना ही नहीं है 3,200 का, because in expansion value you are getting much more than your desired 3,200, okay। And just your total is like, just add these two, you will get the total figure, okay। इसमें कुछ नहीं है, okay। So now for writing the answer marginal costing statement में you have to give decisions, ठीक है। तो आंसर जो है सही तरीके से आपको लिखना है, ओके। तो ये पहली बात है, इट वाज फाउंड दैट प्रॉफिट इंक्रीज बाय 22,400, ओके। इट इज मच हायर देन एक्सपेक्टेड इनकम ऑफ 3,200, ठीक है। सो द प्लांट शुड बी एक्सपेंडेड, बस खत्म, ओके। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है प्रॉब्लम 22, ओके। So let's read this. A manufacturer with overall capacity of 1 lakh machine hours. So total capacity is 1 lakh machine hours, ठीक है, but it is interchangeable among the products, ठीक है। ये 1 lakh machine hours को ही क्या किसी प्रोडक्ट में ज्यादा यूज कर सकता है, किसी में कम कर सकता है, ओके। You can increase and decrease it, but total capacity is 1 lakh machine hours, okay. So now he's producing a standard mix of 15,000 units of product A, okay, and 10,000 units of B and C. Okay, so 3 products he's producing, A, B, and C. Okay, 15,000, 10,000, 10,000 units. Okay, chalo, what next? On experience, total expenditure exclusive of his fixed charges is found to be 2.09 lakhs. This is the total variable cost, because they have said exclusive of fixed charges. So it is the total variable cost. Okay, chalo. And the cost ratio among the products approximately is 1, 1.5 and 1.75 respectively per unit. Okay. अब आप इसको separately पढ़ोगे cost ratio, so it is not very clearly said whether it is variable cost ratio or the total cost ratio. ठीक है. So because it's a marginal costing problem and you have been given fixed expenses data separately, so इसीलिए हम we are assuming that this should be a वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ठीक है।
आपके जो एग्जाम के प्रॉब्लम्स वगैरह में इट विल बी क्लियरली स्टेटेड दैट इट इज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, आपको यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, so this is the variable cost ratio. Okay, चलो then next, the fixed. ठीक है, the fixed charges come to 2 per unit. Okay, see they've given you fixed cost data separately. Okay, it's 2 per unit. Then when unit selling prices are 6.25 for A, 7.5 for B, 10.5 for C, he incurs a loss. ठीक है, तो ये जब when they've given you unit selling prices for these three and they said that he incurs a loss. ठीक है, now if we go ahead, they are saying they've given you 3 mix. ठीक है, what is the original mix they gave? 15,000 for A, 10,000 for B, 10,000 for C. That's the original mix. Okay, apart from that they've given us 3 mix. This is mix A. Okay, these are the units. Mix 1, mix 2, mix 3. ठीक है, and then they're asking us as a management accountant, what mix will you recommend? Okay, so whichever mix gives the maximum profit, that we will recommend. ठीक है, इसमें सबसे पहले now we have got originally what we have got is unit selling prices. So we want the variable cost. ठीक है, so variable cost we can apply to everything. It will be the same. Fixed cost we already have 2 per unit, so you can use it directly. ठीक है, so for variable cost, what information we have is this is the variable cost ratio. ठीक है, ओके, तो अगर यहाँ पे what we can say is okay, this is 1, 1.5, 1.75. so 1 is for A. ठीक है, so consider that this is variable cost per unit. Okay, this will be the ratio, correct? So if this is X or A, whatever you can consider, if this is X, this will be 1.5x, this will be 1.75x. ठीक है, ये रहेंगे तीनों का वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सो वहां से वी विल स्टार्ट बिकॉज वी हैव टू, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हमको वी हैव टू क्रैक द वेरिएबल कॉस्ट. वी हैव गॉट फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑलरेडी. ठीक है, तो चलिए तो अब इसमें इसको आगे लेके चलेंगे हम. ओके, सो नाउ start with your variable cost per unit. Okay, as per the ratio. ठीक है, पहले वाले का just take it as x, second will be 1.5x and 1.75x. Now in the first mix we already have what the units we already have. ठीक है, ये units already have 15,000, 10,000, 10,000. Just multiply by these per unit values जो हमने अभी निकालने. So you will get what? Units into per unit amount, you will get the total amount. ठीक है, total variable cost is what you will get. So this multiplied by x or 1.5x and 1.75x. Multiply this, you will get this. ठीक है, अब इसको जब ऐड कर देंगे हम, what we will get is total variable cost. ठीक है, this is our total variable cost, 47,500x. Okay, right, this is our total variable cost. Now this has been given in the problem already. ठीक है, the total expenditure exclusive of fixed charges, मतलब variable cost, okay, is found to be 2.09 lakhs. 2,09,000 is the total variable cost they have already given. ठीक है, so we'll put this and we can get the value of x. Okay, 47,500x equals to 2,09,000. X will be equal to 2,09,000 upon 47,500, which is 4.4. ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया. So now just replace the value of x in these three. आपको मिल जाएगा तीनों वेरिएबल कॉस्ट. सो वी गेट नाउ विद दिस विल गेट ऑल 3 वेरिएबल कॉस्ट. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट दिस प्रॉब्लम. ठीक है, ये एक बार बन गया इतना, देन आफ्टर दैट इज नॉट अ बिग थिंग.
चलिए, सो x इज 4.4, ठीक है, बस वैल्यू आप डाल दीजिए, यू विल गेट दिस वैल्यूज 4.4, 6.6 एंड 7.7. दीज आर द थ्री वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ओके, चलिए, सो नाउ ओके, सबसे पहले क्या करेंगे हम, करंट मिक्स, विल सी वेयर द करंट मिक्स स्टैंड्स. ठीक है, तो कंप्यूटेशन ऑफ लॉस उन्होंने बोल दिया, बिकॉज इन द प्रॉब्लम दे हैव सेड दैट इट विल गिव अ लॉस. ठीक है, सो यहाँ पे what you have to use is, see this one. Okay, when unit selling prices are 6.25 for A, 7.5 for B and 10.5 for C. ठीक है, ये रहेगा आपका per unit. Just put here per unit here. Variable cost just now we have computed. ठीक है, okay, so this will be selling price is given. ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमने अभी भी कंप्यूट किया, राइट, ये वो डाल दीजिए, यू विल गेट योर कंट्रीब्यूशन. ठीक है, वंस यू गेट योर कंट्रीब्यूशन, हमारे पास यूनिट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट, दे हैव गिवन अस द यूनिट्स. ठीक है, 15,000, 10,000, 10,000, मल्टीप्लाई दिस बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन हियर, इसको यू विल मल्टीप्लाई बाय दिस पर यूनिट कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो विल गेट द टोटल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये आ गया हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन. ठीक है, ऐड दिस एंड विल गेट दिस. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट वाज गिवन एज 2 पर यूनिट, तो टेक द टोटल यूनिट्स. टोटल यूनिट्स क्या है, 15,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000. ओके, विच इज 35,000. तो इट इज 35,000 इंटू 2 आपका फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, तो विच इज हाउ वी आर गेटिंग अ लॉस ऑफ 5250. बस इसमें बस ये आ गया है ना, नाउ यू हैव गॉट एवरीथिंग. ओके, ऊपर के जो मिक्स दिए हैं, वट एवर टू मिक्सेस दे हैव गिवन, बस जस्ट यूज दीज मिक्सेस. ठीक है, यूज दीज मिक्सेस और हमको सारा एवरीथिंग वी कैन फाइंड यूजिंग दिस. ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो है एट मिक्स 1. ओके, यहाँ पे हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है. ओके, और ये जो दिया है ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दैट इज फॉर ऑल द मिक्सेस. ठीक है, यूनिट सेलिंग प्राइसेस ये तीनों. ओके, दैट वी विल मेंटेन. ओके, तो आपको अभी क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज, यू डोंट हैव टू अगेन सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू हैव पर यूनिट कंट्रीब्यूशन. जस्ट यहीं से आगे के प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, व्हाट वी विल डू इज, आगे का जो पार्ट है व्हाट वी विल डू, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके, टेक द कंट्रीब्यूशन एंड हियर जस्ट पुट द यूनिट्स, जो भी न्यू यूनिट्स है ना वो यहाँ डाल दीजिए तीनों. मल्टीप्लाई दिस टू, यू विल गेट टोटल कंट्रीब्यूशन. और यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट के लिए जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2, वट एवर इज द टोटल ऑफ द यूनिट्स, और हमको प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा. ओके, दैट्स हाउ विल हैव टू एग्जामिन ऑल थ्री. बस, तो इसमें पहले वाले में, फर्स्ट वाले में आपका आता है. ओके, you still get a loss of 63,000. ओके, ठीक है, 63,000. ठीक है, अच्छा, बस इतना है जो फिक्स्ड कॉस्ट में जो है ना. ठीक है, एक वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज, सी जब भी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट दिया रहता है ना, व्हेन एवर यू आर गिवन पर यूनिट, ऑलवेज जो बेस डेटा होता है आपका, व्हेन एवर वट एवर इज योर बेस डेटा, फर्स्ट डेटा जो दिया है ना, उससे मल्टीप्लाई करके जो आता है, दिस दैट इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है, ओके, बिकॉज ये पर यूनिट जब देते हैं, इट इज इन रिलेशन टू योर बेस डेटा. So 70,000 becomes a total fixed cost. If in the other combinations units become more than 35,000, still your fixed cost will remain 70,000. ठीक है, वो याद रखना. तो इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 70,000 है. इन दिस मिक्स इफ यू सी, टोटल इज 37,000 आता है ये. ओके, बट स्टिल योर फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स एट 70,000. बस ऐसे ही है, नेक्स्ट वाला भी आपको सेम वही करना है आपको. So you're getting a loss of 450, and the third mix finally you're getting a profit यहाँ पे. Okay, so as a management accountant what we will say, ठीक है,
one should recommend mix 3 because there is profit of 300 against loss at other mixes. ये अपने मन से आप लिख सकते हो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं. एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट what will you recommend ऐसा पूछेगा. Okay, so I will recommend mix 3 because there is a profit and in other mixes there are loss, there is a loss. बस ठीक है, इतना ही आपको लिखना है. So यहाँ पे हो गया, right? So problem 23 onwards we will do in the next class. ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम लोग. Okay, on problem 23. So I'll close the class now. Okay, so thank you and we will meet very soon. Okay.